Hello students, welcome again to our animation world. As in the previous video, we had learned how to arrange numbers in descending order. Today again we are going to study how to arrange numbers in descending order. But there are only some changes. अब इसमें changes क्या है ये आपको एक एग्जाम्पल से बताते हैं. This is the family of Varuna. There are 4 members in her family. Varuna, her brother, and her parents. Varuna is of 10 years old. Her brother is of 19. Her mother is of 37. And her father is of 40 years old. Now tell me, who is the youngest and eldest in her family? अब ये जानने के लिए कि वरुणा की फैमिली में कौन सबसे छोटा और कौन सबसे बड़ा है, हमें उनकी एज को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होगा. Let's arrange their ages in descending order, stepwise, as their ages are 37, 40, 10 and 19. Step 1 will be, from given numbers, pick the number with the greatest digit at the tens place and write it down. Means, इन numbers में से हम tens के place के digit को compare करेंगे और सबसे ग्रेटेस्ट टेंस के प्लेस के 2 डिजिट नंबर को राइट करेंगे. राइट करने के बाद उस नंबर को क्वेश्चन से कट कर देंगे. एज द नंबर्स आर 37, 40, 10 एंड 19. तो यहाँ हम टेंस प्लेस के डिजिट्स को कंपेयर करते हैं. 3 in 37, 4 in 40, 1 in 10 and 1 in 19. Which is the greatest digit in these? Correct. 4 of 40. So, firstly we will write 40 in answer and cut it from the question. Step 2. From the remaining 3 numbers, pick the number with the greatest digit at the tens place and write it down. Which is the greatest digit in these 3 numbers? It is 3 of 37. So, we will write 37 in answer and cut it from the question. Step 3. From the remaining 2 numbers, pick the number with the greater digit at the tens place and write it down. So, which number is greater in these 2 digit numbers? 10 and 19. Let's compare their tens place digit. 1 of 10 and 1 of 19. अरे ये क्या, दोनों ही नंबर्स के टेंस प्लेस के डिजिट सेम है 1. इट मीन्स दोनों इक्वली है. नो, इसमें से कोई एक तो ग्रेटर है. अब वो कैसे पता चलेगा? आई एम टेलिंग. इफ एनी 2 or 3 numbers have same tens digit, then we compare their digits at ones place. Example, we have 2 numbers 10 and 19. इन दोनों नंबर्स के टेंस प्लेस के डिजिट्स सेम है 1. तो हम इनके वंस के प्लेस के डिजिट को कंपेयर करेंगे, विच आर 0 and 9. Which digit is greater? Yes, 9 of 19. So, we will write 19 in answer and cut it from the question. Step 4. Write the remaining number, that is 10. Thus, these numbers are in ascending order now because ये greatest to smallest arrange है. First, greatest 40, फिर उससे small 37, फिर उससे भी small 19, and at last smallest number 10. So here, Varuna is the youngest and her father is the eldest in her family. Let's take one more example. Numbers are 16, 84, 25, 88. Step 1. From given numbers, pick the number with the greatest digit at the tens place and write it down. Means, इन numbers में से हम tens के place के digits को compare करेंगे और greatest tens के 2 digit number को write करेंगे. Write करने के बाद उस number को question से cut कर देंगे. As the numbers are 16, 84, 25 and 88. अब यहाँ हम tens place के digits को compare करते हैं. 1 in 16, 8 in 84, 2 in 25 and 8 in 88. Which is the greatest digit in these? You will say 8.
Yes, you are right. But यहाँ 2 numbers हैं और दोनों के ही टेंस के प्लेस के डिजिट सेम है 8, तो क्या दोनों ही ग्रेटेस्ट है? नो, अगर किन्हीं भी नंबर्स के टेंस के प्लेस के डिजिट सेम हो तो हम उन नंबर्स के वंस के प्लेस के डिजिट्स को कंपेयर करते हैं, which are 4 and 8. Now tell me, which is the greater digit, 4 or 8? Yes, 8. So, we will write 88 in answer and cut it from the question. Step 2. From the remaining 3 numbers, pick the number with the greatest digit at the tens place and write it down. Now tell me, which is the greatest 2-digit number in these? Yes, it's 84. So we'll write 84 in answer and cut it from the question. Step 3. From the remaining 2 numbers, pick the number with the greater digit at the tens place and write it down. So which number is the greater in these 2-digit numbers? 16 and 25. Let's compare their tens place digits. 1 of 16 and 2 of 25. We find 2 of 25 is greater. So, we will write down 25 in answer and cut it from the question. Step 4. Write the remaining number, that is 16. So kids, thus these numbers are in ascending order now because they are arranged in greatest to smallest. Greatest 88, उससे small 84, उससे भी small 25, and at last smallest number 16. So I hope kids you may have understood the concept of how to arrange numbers in descending order. If any 2 or 3 numbers tens place digits are same, so we compare their ones place digits. Now kids, it's your practice time. Question is, complete the page number 85 and 86 in your book. Some examples are given here. Write A for ascending order and D for descending order. Numbers are 14, 21, 35, 94 and 99. अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये नंबर्स कौन से ऑर्डर में अरेंज है, डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में. अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में है तो आपको A राइट करना है, अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो आपको D राइट करना है. एज वी कैन सी, पहले स्मॉलेस्ट 14, फिर उससे ग्रेटर 21, फिर उससे भी ग्रेटर 35, फिर उससे भी ग्रेटर 94 और फिर लास्ट में ग्रेटेस्ट नंबर है 99. इट मीन्स ये नंबर्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट अरेंज है. और जब भी कोई नंबर स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट अरेंज हो तो कौन से ऑर्डर में होते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में. सो वी विल राइट A फॉर असेंडिंग ऑर्डर. नेक्स्ट नंबर्स आर 89, 81, 78, 25 एंड 12. सो लेट्स सी ये नंबर्स कौन से ऑर्डर में अरेंज है. एज 89 ग्रेटेस्ट नंबर, 81 उससे स्मॉल, 78 उससे भी स्मॉल, 25 उससे भी स्मॉल एंड एट लास्ट 12 स्मॉलेस्ट नंबर. मीन्स ये नंबर्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज है. और जब भी कोई नंबर्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज हो तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं. सो फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर वी विल राइट D. नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर एज वेल एज डिसेंडिंग ऑर्डर. आपको कुछ नंबर्स दिए गए होंगे, आपको उनको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में. सो लेट्स फर्स्टली अरेंज दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. सो फर्स्टली वी राइट स्मॉलेस्ट नंबर 17, फिर उससे ग्रेटर 33, उससे भी ग्रेटर 39, फिर उससे ग्रेटर 40 एंड एट लास्ट ग्रेटेस्ट नंबर 75. डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको जस्ट ऑपोजिट करना है. फर्स्ट ग्रेटेस्ट नंबर, फिर उससे स्मॉल 40, फिर उससे भी स्मॉल 39, फिर उससे भी स्मॉल 33 and at last 70. So kids, that's it for today. We will meet again in next video.